guys, it's me again and in today's video मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ब्राउनीज बट विद अ ट्विस्ट। ये ब्राउनी चॉकलेटी होने के साथ साथ बहुत ही फजी भी है and it is filled with Biscoff spread from the center. Each bite will give you a delightful taste of both chocolate and Biscoff in one dessert. Hey guys, I am Chef Aruna from Truffle Nation Baking Academy, where we turn your passion for baking into a profitable business in just 6 months. Also, if you're interested in our offline courses, then check out the link below, because our seats for 2024 March is almost full. तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले we'll freeze the Biscoff spread in this baking tin. मैंने पहले से ही इस टिन को बटर पेपर से लाइन करके रखा है। बिस्कॉफ स्प्रेड को पोर करके ऊपर से अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। Now we'll keep this in the freezer जब तक ये पूरी तरीके से सेट ना हो जाए। Now let's make the brownie batter. First we'll prepare the baking tin by brushing oil and placing butter paper at the bottom. अब हम एक बोल में बटर एंड डार्क चॉकलेट को साथ में मेल्ट करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसी चॉकलेट मिक्सचर में सिफ्टेड नेचुरल कोको पाउडर ऐड करेंगे एंड लेट दिस मिक्सचर कूल डाउन कंप्लीटली। सो डूइंग दिस स्टेप विल एनहांस द फ्लेवर ऑफ कोको पाउडर। अब हम इस बोल में बॉइल्ड वाटर के साथ कैस्टर और ब्राउन शुगर को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे until both the sugar dissolves a little. Now in this we'll add in the chocolate mixture along with some curd and vanilla essence. Then give it a proper mix. Lastly हम इसमें ऑल पर्पस फ्लावर एंड कॉर्नफ्लावर को सिफ्ट करके एक स्मूथ बैटर बना लेंगे। Also guys, if you want to make the Nutella version of this recipe, then click the link given in the description box for our Nutella filled brownie recipe. अब हम अपने ब्राउनी बैटर का हाफ पोर्शन इस बेकिंग टिन में पोर कर देंगे। Then we'll place the frozen Biscoff spread block on top, followed by the remaining brownie batter. गार्निश के लिए हम सिंपली चॉप चॉकलेट एंड हेजलनट्स को ऊपर से प्लेस कर देंगे। Now we'll bake this brownie at 180 degrees Celsius for 35 to 40 minutes. So our brownie is baked and has completely cooled down. Now we'll keep it in the fridge so that हम इसे अच्छे से कट कर पाए। So our brownie is set properly. Now let's demold this and cut it into 4 square pieces.
and you can see how gorgeous it looks. I hope you guys like this recipe. So do like, share and subscribe to our channel, and do not forget to hit the bell icon to stay updated. And I'll be back with another new recipe. Till then, keep baking.